अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज ओपन हाउस है बीएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का। आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास जो 4th ईयर के बीएस स्टूडेंट होते हैं, वो अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो एक सुपरवाइज़र के साथ उन्हें असाइन कर दिया जाता है और एक साल वो फिर उस सुपरवाइज़र के साथ रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किसी टीचर के साथ किया है जो बीएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जिन्हें मैं अभी आपसे मिलवाऊंगा थोड़ी देर तक। उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ओपन हाउस। ओपन हाउस में ये होता है कि जो पोस्टर प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट वो सामने सबके रखते हैं, जो एक्सटर्नल हैं उनके सामने रखते हैं, और जो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं उसे देखना चाहते हैं या जो विज़िटर हैं उसे देखना चाहते हैं तो वो उनके सामने वो रख रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि इसमें बेस्ट पोस्टर कहना चाहिए, बेस्ट पोस्टर जो है वो काउंट होता है। वो जो भी होगा मैं उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है इसमें भी एक सारे प्रोसीजर के बाद, यानी ओपन हाउस भी है, इसमें डिफेंसेस भी होते हैं, रिपोर्ट्स भी होती हैं, तो ये एक ओपन हाउस भी एक उसका हिस्सा होता है। तो ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद स्टूडेंट को एक बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड भी को एक मेडल मिलता है, वो हम बाद में उसको देख लेंगे। रेक्टर मेडल होता है या गोल्ड मेडल होता है, वो मिल रहा होता है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ फाइनल प्रोजेक्ट, जो कि उसका एक हिस्सा है ओपन हाउस। वहाँ स्टूडेंट ने क्या काम किया है मैं आपके सामने वो रखूँगा। So my topic is rotating flow and heat transfer of Maxwell fluid using Khatanov-Kirchhoff heat flux theory. जिसमें हम ये वाली हमारे पास जैसे ये हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास जो शीट है वो हमारे पास स्ट्रेच हो रही है इन एक्स डायरेक्शन, देयर इज़ नो मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में हमारे पास रोटेशन हो रही है। एट वॉल हमारे पास टेम्परेचर है जी डब्ल्यू और कंसंट्रेशन है सी डब्ल्यू, और अवे फ्रॉम द सरफेस हमारे पास टी इन्फिनिटी आ जाता है। या अजम्पशन ऑफ द प्रॉब्लम्स में हमारे पास लिखा हुआ है कंसीडर थ्री डायमेंशनल फ्लो, हमारे पास थ्री डायमेंशनल फ्लो है ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल मैक्सवेल फ्लूइड ओवर एन इलास्टिक सरफेस। जैसे हमने बताया कि इलास्टिक सरफेस है वो स्ट्रेच हो रही है, सरफेस स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन विद लीनियरली वेरिंग वेलोसिटी यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी है यू डब्ल्यू वो हमारे पास ए एक्स है। द फ्लूइड रोटेट अबाउट जी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी विच इज मेगा। And let TW and CW be surface temperature and concentration, and T infinity and C infinity be temperature, ambient value of temperature and concentration. Moving on to the equation of motions, we have continuity equation, momentum equation, energy equation, concentration equation. Continuity equation, it comes from law of conservation of mass, which is del dot V is equal to 0. Momentum equation, it comes from law of conservation of momentum. Energy equation, it comes from law of conservation of energy, and this is concentration equation. These are the boundary condition that applies to these equations. At z is equal to 0, which is हमारे पास x y डायरेक्शन में प्लेन है, हमारे पास इधर u हमारे पास ax है, v में v की तरफ कोई भी फ्लूइड मूव नहीं हो रहा, तो v इज इक्वल टू 0 है, और w इज इक्वल टू 0 है। t इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी, वही बात कर दी। c हमारे पास क्या है, सी डब्ल्यू है। एज z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब हम हाई लेवल पे जाते हैं जहाँ पे सिर्फ रोटेशन हो रही है, रोटेशन की वजह से कोई भी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड नहीं है इन यू डायरेक्शन और इन एक्स डायरेक्शन और वी डायरेक्शन, तो हमारे पास 0 होगा। और टेम्परेचर और कंसनट्रेशन है हमारे पास टी इन्फिनिटी। इसमें जो हमें पैरामीटर्स गिवन है, जैसे रो है हमारे पास फ्लूइड डेंसिटी, पी हमारे पास प्रेशर, सी पी एस हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टी एस फ्लूइड टेम्परेचर, एंड सी हमारे पास यहाँ पे कंसनट्रेशन है। यूजिंग दिस सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पीडीज हैं इनको कन्वर्ट कर देंगे ओडीज में, ताकि हम हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाल सकें। इनको यूज़ करके हमने इनको ये 4 हमारे पास ओडीज आ गए हैं, और इन्हीं को यूज़ करके इन बाउंड्री कंडीशंस को हमने कन्वर्ट कर दिया इन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कंडीशंस में। अब इसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ पे लैम्डा है हमारे पास, ये था हमारे पास लैम्डा, जैसे रोटेशन पैरामीटर है, बीटा इज रेफरेंस नंबर, प्रांटल इज प्रांटल नंबर, गामा इज थर्मल एक्सेशन पैरामीटर, एस सी इज किमिक नंबर, delta is temperature difference parameter, and sigma is dimensionless reaction rate.
हमने इन दिस ट्रांसफॉर्म बॉडी कंडीशन को मैटलैब में बिल्ट इन पैकेज था B4C, हमने उसको यूज़ करके इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाले हैं। दीज आर दी अवर मेन रिजल्ट्स जो कि हमने मैटलैब से यूज़ किए हैं। ये हमारे पास दोनों एफ प्राइम ऑफ ईटा के ग्राफ हैं। दिस इज थीटा प्राइम ऑफ ईटा एंड दिस इज थीटा प्राइम ऑफ ईटा। एफ प्राइम ऑफ ईटा हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल को डिनोट करता है जो कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है, तो वो यू हो जाएगी हमारे पास। और थीटा जो हमारे पास टेम्परेचर प्रोफाइल है, और थीटा प्राइम है हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट। अब हम देखेंगे कि कहाँ ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेलोसिटी प्रोफाइल यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। तो देखें लैम्डा हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो हमारे पास यू वेलोसिटी प्रोफाइल है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे रोटेशन हमारे पास इंक्रीज़ होगी, रोटेशन की वजह से एक्स डायरेक्शन में जो फ्लो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, ये हमें यह बताता है। सेकेंड में हमारे पास डेब्रा नंबर है। डेब्रा नंबर हमारे पास यहाँ पे था लैम्डा 1A। लैम्डा 1 इस रिलैक्सेशन टाइम, कि जब भी हम फ्लूइड को पे स्ट्रेस देंगे वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए जो टाइम लेगा वो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे डेब्रा नंबर इंक्रीज़ कर रहा है विच मीन्स रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, और हमारे पास शो हो रहा है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम इसको कहते हैं कि जितना ज़्यादा हमें टाइम लगेगा वापस उस इक्विलिब्रियम में आने में, उतने ज़्यादा स्लो फ्लूइड मूव करेगा, तो वेलोसिटी। ओके, दिस इज थीटा एंड थीटा प्राइम। थीटा प्राइम में भी हम देख सकते हैं गामा जो है, गामा इज रिलैक्सेशन पैरामीटर विच इज़ दिस थर्मल रिलैक्सेशन टाइम। इसमें भी है कि थर्मल रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा हमारे पास जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो डिक्रीज़ होगा। और इसमें भी हमारे पास ये है कि प्रांटल नंबर और ये गामा जो है जिस वजह से बढ़ रहा है, जो हमारे पास थीटा प्राइम और थीटा वो इंक्रीज़ हो रहा है। My name is Mohammad Zakaria and I'm final year mathematics student at SNS, and my supervisor is Dr. Tuba. My research project is basically about the pinewheel disease, and in this project we have shown that the reproduction number has a threshold property, and numerical simulations show that endemic level of infected vectors becomes independent of saturation level. The main problem with this disease is that when the pine trees get infected by pinewood nematode by the adult pine spheres, we cannot recover them. Therefore, we use different mathematical models so that we can develop and carry out the stability analysis of this model. Why we are using the mathematical model, it's an important question, as there are different recruitment rates like pi h and mu h, theta, lambda, delta 2, delta 1, the alpha 1 and alpha 1, and you can see here alpha 2. There are different recruitment rates. Therefore, if we want to deal with all these recruitment rates, we have to develop the mathematical models, and after developing this mathematical model, we will carry out the stability analysis of a disease free equilibrium point and endemic equilibrium point. Disease free equilibrium point is a point at which there is no disease in the pine trees, and the endemic equilibrium point is a point at which the pine trees has this carrying this disease. There are three main definitions which are important to understand, so that you can get to know what the research is about. Susceptibles is a species which can be harmed by another species, and exposed is a species which is carrying the disease but not yet identified by any test, and infected is the species which are carrying the disease and identified. Here are the notation which denote susceptible pine trees by SH, and exposed pine trees by EH, and infected pine trees by IH, and so on. Here you can see that pi h is our recruitment rates through which the pine trees are adding in our environment, and minus mu h is those pine trees which are dying due to the natural cause, not due to these pine wood nematodes. As these trees are not died with the pine wood nematodes, therefore we are subtracting this amount of trees, and this is the transmission rate between the those susceptibles which are exposed and get the get infected. Therefore we are using the negative sign here, and as these are becomes the exposed, therefore we are adding these two terms here. And beta 1 is the rate at which these exposed are infected, and we have identified these exposed one. And mu h is again those infected trees which are died due to the natural cause, and similarly we have done these things.
And after this, our main objective was to carry out the stability analysis of this model. And for this, we have, as you can see, that it is non-linear different system of differential equation. We first linearize this system of differential equation by the Jacobian matrix. After this, we have find the characteristic equation through which we will find the eigenvalues. As you can see, that here there are different recruitment shares. Therefore, we have used the Rouse-Harvest criteria. It says that if the coefficients of characteristic two coefficients of characteristic equation is greater than the third one, then our eigenvalues will be negative. As you know that if eigenvalues are negative, then our system is stable, otherwise unstable. Therefore, we choose those type of coefficients which satisfies this criteria, and there is a lengthy calculation. Therefore, I haven't put on my poster. And after this, we have seen the stability analysis at the endemic equilibrium point. As I have mentioned before, endemic is a point at which disease persists. And in order to analyze the stability of endemic equilibrium point, we have used this lemma, and it says that if the transpose of a matrix, determinant of a matrix, and determinant of additive compound matrix is less than 0, then our system is stable, and it will have the negative values. Therefore, we have again the linearized, as we have linearized for the disease-free equilibrium, and we get these things. Afterwards, as the stability analysis gives the theoretical about the stability analysis, therefore we have numerically simulate this our differential equation. And as we can see here from the graph, that after when t increases, and it will becomes the change in the infectious host becomes constant, and it means that our system is stable. And you can see that here reproduction number decrease as kappa, our which is directly proportional to mu h, is when kappa is increasing, our reproduction number is decreasing. At the end, we can see that by the Rouse-Harvest criteria and the lemma, our system is stable. It's all about our research project. In future, we are planning to do the sensitive analysis of the same model. Yes, it was all about my research project. Thank you. Assalamu alaikum. I am Amima Tahir, and my final year project is Acceleration of Novel Topology Generation Algorithm for Finite Sets of Supercomputer Clusters, which I am doing under the supervision of Dr. Qasim. And I really thank him for that as well, because he taught us this course of topology, which encouraged me to do my work in topology as well. Before I move on to the objectives of my final year project, I would first like to tell that what topology is. It's basically let's say we would have empty set and set at a set X in it, and then the intersection of any two elements of those sets should be in it as well, and then arbitrary union of any number of elements of that should also be in it. Yes. So and if these three axioms are satisfied, then tau would be a topology. Now, moving on, let's talk about what were my objectives. The first objective of my final year project was that I was going to develop an algorithm for the generation of topologies, where n could be for n is equals to any finite values. So, and then further to once the algorithm has been generated, then we were going to accelerate it over supercomputer cluster. That was the first objective. The second objective was, you would be familiar with, there are different sources, there are different platforms such as Symbol Labs, such as GeoGebra. These platforms exist, but there is no such platform which exists for topology. So the second objective was to come up with such open source platform which will be available anywhere in the world to anyone, to researchers, to student, to visualize topology, to check that if something is topology or not, and that. Now, the techniques that we used were, I would not get into detail of it, but the techniques that we used were supercomputer clusters, and then using that parallelization and pipelining. NUST has Pakistan's the biggest supercomputer. It has two head nodes, 32 compute nodes, and further each compute node has 8 cores. So, see my computer, it has 4 cores, whereas NUST supercomputer has 256 cores. So you can see that how efficient it will make everything if we accelerate it over supercomputer clusters. We use the technique of parallelization and pipelining. I'll move on to the results. Okay, so let's say that I had a set of n is equals to 5 elements. If we have an unoptimized algorithm
For that, the time taken for an unoptimized algorithm were of 82 hours. But when we accelerated it and when we made our code efficient using different workers, different amount of workers, the time taken when we had used the supercomputer clusters, it was 1.6 hours using 256 workers of our NUST supercomputer. And that is like a 98% of efficiency in our algorithm. You can see the map as well, the graph as well, in which we have an optimized algorithm, we have different workers, and we have shown how exponentially it is, decreasing as the number of workers are increasing. The second objective of our final year project of my final year project was creating a fully functional website, and this is the website. You can also scan the QR code and you will be able to reach the website. Anyways, I have the website opened here. So what happens is that it tells us about, I will move to the home page first. Okay, so let's get started with it. I'm going to enter any topology here. Okay, let's say not topology, I'm going to enter any power set here. So once I have entered the power set, it will check for me that if that power set is a topology or not. So we have entered it, and then I am also going to enter set X and check. So you can see input set is a topology. That's our answer. So it is checking if I have entered a topology, it is telling me that if it's a topology or not. Similarly, it can also generate the topology. Let me just take an example here. So I'm going to take 1, 2, 3. Okay, for now. So check. You can see that all the topologies have been generated for n is equals to 1, 2, 3. Set of 3 elements. Then we can also visualize it. By visualization, again, I am going to give it a set. Let's say I give it a set of n is equals to again 3. It will visualize the topologies for me. And this visualization we came up with ourselves. I designed these visualization myself. If I increase the number of n here, let's say that I input the value 1, 2, 3, and 4. So in that case, it is going to visualize all the topologies for n is equals to 4, which are about 300 something. So yes, these are the results of my final year project. And I have also published my paper with sarcasm under the Journal of Applied and Computational Topology. About future direction of this research, see, you can already see that we have visualized for n is equals to 3, n is equals to 4. We will be able to visualize for n is equals to 5. Now, if we train our machine learning algorithms for all of this data set, then maybe that machine learning algorithm will be able to visualize for greater value, for higher value of n. So we don't really have to calculate the topologies. Like, of course, it's a future prediction. Maybe I would be working, inshallah, I would plan to working on that. And there's another direction to it as well. There's another concept of structures, mathematical structures, which is filters, and T0 and T1. So hopefully we can also extend our research in that direction as well. That's all from my side. Thank you. Hello, my name is Daud Asghar. I am a final year student of BS Mathematics at NUST School of Natural Sciences. I am going to explain my final year project in a poster presentation. The project supervisor is Dr. Mujibur Rahman. Let's start with the abstract. Actually, in this final year project, हमने 2 numerical methods introduce किए हैं for the solutions of fractional differential equations. फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें फ्रैक्शनल कैलकुलस की जरूरत पड़ती है. जिस तरह इंटीजर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमें ऑर्डिनरी इंटीजर ऑर्डर कैलकुलस की जरूरत होगी, उसी तरह से फ्रैक्शनल कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फ्रैक्शनल कैलकुलस. इट इज एक्चुअली द सब्जेक्ट इज एज ओल्ड एज द क्लासिकल कैलकुलस. In 1965, when Leibniz presented this notation for the nth order derivative of a function, L'Hopital raised the question, what if the order be 1 by 2? Then Leibniz replied, it will lead to a paradox in which from which one day useful consequences will be drawn. This is a short history of the fractional calculus. Then after that, many mathematicians presented many definitions for Riemann level fraction, for integral operators and differential operators. But the two mostly used definitions are presented here. Then we talk about the application of fractional calculus. It is quite a very interesting application. Like it is a curve, name as orthogonal problem. First Abel discovered this. Actually, suppose there is a curve from point P to point Q. We have to find the curve for which the ball reach the point Q in the shortest time, no matter from which height the ball is
released. एक्चुअली हमें पॉइंट पी पे या उससे नीचे या इवन वेरी क्लोज टू पॉइंट क्यू हम बॉल को रिलीज करेंगे और वो बॉल पॉइंट क्यू के ऊपर एट द सेम टाइम पहुंचना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट कि हमने उसको कहाँ से छोड़ा है। इसके मॉडलिंग के थ्रू एक इंटीग्रल इक्वेशन बनी, देन बाय सम मैथमेटिकल देन एप्लीकेशन के बाद हम एक एग्जांपल में दे रहा हूँ फ्रैक्शनल इंटीग्रल कैलकुलेट किस तरह करते हैं। यहाँ पर एक वेरी सिंपल फार्मूला है जो कि इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए प्रेजेंट किया गया है कि कोई भी फंक्शन जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सके उसकी हम फ्रैक्शनल इंटीग्रल इस फार्मूला के थ्रू वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम sin x एग्जांपल लेते हैं। sin x को हमने मैक्लॉरेन सीरीज के थ्रू इस तरह से एक्सपेंड किया। इस तरह से एक्सपेंड करने के बाद हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए दिस रिजल्ट वी विल गेन। अब इसके अंदर ये e2 अल्फा प्लस 2 दिस इज एक्चुअली मिटाग-लेफ्लर फंक्शन, इट्स अनदर स्टोरी, सो लीव इट। देन उसके बाद हमने एक 3D प्लॉट प्रेजेंट किया। इस प्लॉट का पर्पज़ ये था कि हम इंटीजर ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर के दरमियान एक कंसिस्टेंसी बता सकें कि इंटीग्रल्स किस तरह मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0 वी हैव दिस कर्व, फॉर अल्फा इक्वल टू 1 द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल of sin x, for alpha equals to 2 we have the second integral of sin x. In between 0 and 1 the curves are moving in a very consistent manner. This shows that the Riemann level fractional integral operator works very fine. Then उसके बाद हम मेन मेथड पर आ जाते हैं। हमारा पर्पस ये था कि इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनके ऊपर हमने आइलर्स मेथड अप्लाई करना है। देन हम आइलर क्वाड्रेचर मेथड पे आ जाते हैं जो हमारा मेन काम है। इसमें हमारा पर्पस ये था कि ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर हमने आइलर्स मेथड अप्लाई करना है। इसके लिए हमने पहले इसको इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो डेरिवेटिव वाला पार्ट था वहाँ पे आइलर्स मेथड अप्लाई किया और जो इंटीग्रल वाला पार्ट था वहाँ पर हमने ट्रेपोज़ाइडल रूल अप्लाई किया। इसलिए ट्रेपोज़ाइडल रूल क्योंकि क्वाड्रेचर रूल्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए हमने एक न्यूमेरिकल स्कीम बनाई जो कि यहाँ पर है। इसके थ्रू आप इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल सॉल्व की। एग्जांपल में एक टेस्ट प्रॉब्लम हमने लिया, खुद एक लीनियर एग्जांपल पहले टेस्ट की, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए। द डॉटेड कर्व्स आर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस व्हाइल द सॉलिड कर्व्स आर द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सॉल्यूशंस जो हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को बिल्कुल करीब है विद सम एक्सेप्टेबल एरर। देन देयर इज अ 3D ग्राफ वेयर हमने ये शो करना चाह रहे हैं तो for n equals to 2 we have this surface of error, for n equals to 40 we have this surface of error, and for n equals to 100 we have this surface of error. This means that when we are increasing n the error is decreasing, which is clearly visible from this figure. Then this figure show the convergence of our method. Like here is the values of n. When we are increasing n from 100 to 10,000 the error is decreasing at a rate we can see that the method is convergent. The error started from this and it is going towards 0. This shows the method is convergent. Then we have solved some application oriented problems like fractional duffing oscillator and fractional Brotto equation. We displayed the results from with the help of these figures, the 2D figures and the 3D figures, which show the a consistent manner between integer order and fractional order solutions. This was the first method, the Euler quadrature method, and now we move to the second method. We name it a simple quadrature method because it is made with the help of a quadrature rule, that is a left hand point rule. Our aim is to convert this okay, I was talking about the second method. We named it a simple quadrature rule because it is made with the help of a simple quadrature rule, that is a left hand point approximation rule. Our aim was to convert this differential equation into a first order integral equation. फिर हम इस इंटीग्रल के ऊपर ये जो फ्रैक्शनल इंटीग्रल है इसको हम लेफ्ट हैंड पॉइंट रूल के थ्रू अप्रोक्सीमेट करेंगे। इसको अप्रोक्सीमेट करके थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के बाद वी गेट दिस न्यूमेरिकल स्कीम। हमने इस पर्टिकुलर मेथड के लिए एरर एनालिसिस भी किया है। उस एरर एनालिसिस में हमने लोकल ट्रंकेशन एरर देन ग्लोबल एरर फाइंड किए हैं। लोकल ट्रंकेशन एरर के बाद हमने रिमार्क दिया है कि इससे हम हमारा मेथड जो है वो कन्वर्जेंट है और कंसिस्टेंट भी है बिकॉज दिस इज द टर्म फॉर लोकल एरर। when h goes to 0 this will goes to 0, this means the method is consistent, and when this will goes to 0 h goes to 0 global error which goes to 0, this means the method is also convergent. We prove this theorem. We claim that the error by using this method will be always be bounded by this inequality. It will not increase by this number. It will always be bounded by this inequality. Then we have the conclusion. Simply we have presented two new numerical methods for the solutions of fractional differential equations. In the first approach we used Euler's method in combination with the quadrature rule. In the second approach we only used the quadrature rule, and hence the results are displayed in front of you. We can see that the methods are convergent and hence can be used for the similar problems. Thank you. यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है और जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि एक विनर हम अनाउंस करते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ओपन हाउस में, और इसके साथ ही एक रनर अप अनाउंस करते हैं। तो अभी विनर अनाउंस हो चुके हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ तो वो आपसे कुछ बात करेंगे, तो मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ अभी।
Assalamu alaikum. I am Amima and I have won the Best Final Year Project Award. And okay, first I would just like to thank my supervisor, Sir Qasim, and the Department School of Natural Sciences, who gave us this opportunity of, presenting our ideas and to work on them and to research on them. So I'll just like to tell that how I came up with the topic. So when we were studying the course of topology, I always had this question that how to visualize the topology or what to understand out of it, because it is such an abstract concept. So whenever I try to search for any research paper or for any whenever I used to Google it, I didn't get anything out of it. So that's where the idea came to my mind, and I was like, I should work on it myself. I should try to develop algorithm for developing topologies myself and to visualize it myself. And that's how I came up with, and Alhamdulillah, my supervisor, when I discussed it with my instructor, Sir Qasim, he really encouraged me. There are some of my friends who really supported me with the idea of using MATLAB, and yes, and all the instructors have been of great support during my algorithm development and website development. And Alhamdulillah, I have achieved it, and I'm really happy. I would like to thank everyone. आगे क्या प्लान है अभी आपका? आगे मैंने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फ्यूचर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पहले भी डिस्कस किए हैं, बट येस आई एम प्लानिंग टू टेक दिस रिसर्च एंड अप्लाई इट ओवर मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट कि हम लोग ने जो विजुअलाइजेशन डेवलप की है, हम उनको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पे रन करें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट्स में डिवाइड करें, और उसके बाद हम लोग ऐसे एल्गोरिदम्स डेवलप करें जिससे हम लोगों के पास टोपोलॉजी फॉर n greater than 5 or for higher values of n we can generate it. So the algorithms can generate for ourselves. Also there's other concept of like filters and T0, T1. I'm also planning to work on that in my future what research. About your personal goals after graduating from here? What do you want to do? I am planning to pursue my masters, inshallah. I haven't really started applying yet anywhere, but I am planning to go in data science stream, machine learning and data science, plus basically computational mathematics side. So yes, those are my goals, and I believe that this research that I have done here, NUST and School of Natural Sciences have provided me this platform, so it will help me further, inshallah, in my in my further research as well, and my masters. Okay, good luck. Yes, thank you, sir.